Now there are certain functions that you can do with string. Okay, so let me show you those functions. So you can do like upper. Okay, so when you do this and run, you can see your entire uh, string is now converted to upper. So you can convert any string into upper. Okay, so you can do this with the help of this command. So similarly you have lower, right? So if you do lower, everything is converted into this, right? So like that there are many. Okay, so these are all the string related functions. Okay, so let's quickly go through some of them. Okay, so I've shown you upper, lower. So there is title, swap case. So what is title? So if I run, you can see it converts the first character of every word into capital. Okay, so that is what the title function does. Okay, you can similarly do swap case also. Okay, so you must have understood what swap case is. Okay, so it converts it will change the case. Okay, so only R was capital. Now you can see R is small and rest everything is capital. Okay, so all these things are there. Okay, so split is used to split a particular string based on some separator. Okay, so if you do not provide any separator, then space is assumed. Okay, so by default it is space. So if I run this, you can see Rizvi is separate and college is separate. Okay, so that is the use of split. Okay, so let's suppose I have something like this. Okay, colon mm. Okay, so what should I, how should I split it? Okay, so this is the separator. So if you do not provide any separator, so अगर आपने ये निकाल दिया तो by default वो क्या लेता है, space लेता है. ठीक है, so it assumes that you want to split based on space. Okay, but if that मतलब normally तो वही scenario रहता है कि space से separator रहता है. But अगर ऐसा कोई scene है जिसके अंदर आपको h अलग चाहिए और m अलग चाहिए and the separator is something different. Okay, अगर separator ऐसा होता, ठीक है, तो ये चल जाता, right? So if I run this, you can see I get HH alag and MM alag, right? But here my problem was I have this separator, right? So when this is the separator, if I run this right now, you can see entire HHMM is together. Okay, so that is not what I want. I want it separate, right? So I will do this. Okay, so if I run this, you can see HH alag, MM alag. Okay, so that is the use of the split command. Do count. Okay, so what is the use of the count function, x dot count? Okay, so x dot count, what it does is, for x dot count to work, you will have to provide something inside this. Okay, so which element do you want to count? Okay, so let's suppose I want to find out how many e's are there in this particular string. Okay, so there are two e's, right? One here and one here. Okay, so if I want to find out, now obviously we can see, that's why we can tell you, right? But what if the string is inside a program and you don't know the string, right? So in that case, to find out how many e's are there, you just have to put e over here. Okay, so you're just saying x dot count e. Okay, so you have to just, your, what this means is find out how many e's are there inside this string. Okay, so if I run this, you can see I get 2. Okay, similarly I can do it for I. That also gives me 2 because there are 2 i's. Okay, so you can do for x and you can see you get 0 because there is no x in this, right? So that is the use of count. Similarly, there is an option for index now. Okay, so now if you want to know where is z coming, okay, at what index, so what is this index? Now index in case of string is it's always starts from 0. Okay, so this r has an index 0. Okay, so this I has an index 1. Okay, so like this, so it always starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Okay, so if I want to find out what is where is this particular z located at, okay, so I will just do index of z, and this should give me, so if I run this I get 2. Okay, yeah, I would like to show you one more thing. So let's suppose I have um, what can I say, a comma b comma c comma d. Okay, so I have the string. Now what I want is I want to remove this comma, and instead of comma I want to put full stop. Okay, so how to do it, right? So there may be many ways, but I will tell you the first way. So let's take the string and do split. Okay, so when I do split, now obviously it will take the default separator is space, right? But here what is my separator? Comma, right? So I will have to provide inside the split comma, right? So that it can split. So let's now print y and see what do we get. Okay, so if I run this, I get a, b, c and d separate, right? So it is separate. Now what are these square brackets and all, we will see in a while. So these are called as list. Okay, so list is like an array in C programming. Okay, so this is ऐसा समझो कि array है, right? So ये array convert कर लिया इसने, तो जो string हम लोग ने दिया था उसको array convert कर लिया, ठीक है? अब क्या, what next? I want to uh, get in a format where instead of comma there is full stop. So for that there is a nice little option. So the option is you just have to start a string, okay, and the separator, whatever separator you want. Okay, so let's suppose you want dot as the separator. Okay, so if you want dot as the separator, let me take first the example of at the rate. Okay, so let's suppose I want at the rate as the separator. So you just have to put it inside a string, okay, and then do dot and then join. Okay, and join and the list, whatever is the list of all the elements that you want to join. Okay, so y is where every element is there. So now if I, let's save this in z. Okay, and let's print z. Okay, so let's see what happens. Can you see? Now I am joining a at the rate b at the rate c at the rate d. Okay, so that means instead of at the rate I can have dot, right? So the reason I started with at the rate, because you can see, it may be little confusing that there is dot over here and dot over here. Okay, so this is inside string. Okay, so that is different, and this is you are trying to access a property. Okay, so you are trying to access a property, that's why this dot is there. Okay, so ye dot और ye dot का मतलब अलग अलग है, right? So if I run this, you can see I get a dot b dot c dot d. Okay, okay, so you can do dot, and there is a complete list of is functions. Okay, so you can see there are so many is related functions. So is alpha. So is alpha means, so let me run this and check. Okay, so I'm just checking x dot is alpha. Okay, so I'm just want to check whether all the characters inside the string x is alpha or not. False. Okay, so obviously because there is a comma, right? So if there is a comma, it is not only alphabets, it is alphabets and special characters. Okay, so let me change this to, let's say, test. So in this case it should give me true, right? Because it is only alphabet. Okay, if I add a space and if I run this, it gives me false, because space is a special character. Okay, so like this there are many functions that are there. So let's suppose you want to check is alpha num. Okay, so alphabet and numbers. So if you want to check that, then obviously this will return you false, because there is a space. Okay, space is a special character, but instead of space if I have one, now if I run this, you can see I get true, because there is alphabets
and there is a number, nothing else is there. Okay, so this will give you true. Okay, so like this you can just try out some of the functions. And now I want to print Shibu at the end. Okay, so I will just remove this and use plus operator, and I will just add name. Okay, so this is normal printing. Okay, so if I run this, you can see I get hello Shibu. Okay, now what you can do is you can actually do dot center. Okay, you can do dot center, and here you can just provide what width do you want. Okay, so if you, let's say if you do 40. Okay, so if you do 40 and if you run it, you can see it is actually taking 40 spaces, right? So this is the 40 space and it is aligning in the center. Okay, so you similarly you can do L just 40. Okay, so left justify, so it will be same but on the left side. Okay, so if I run this, you can see it is coming over here, but actually this string is so big. Okay, so you can also do R just. Okay, so R just will be on the right. Okay, so these are some of the functions that the string has. So now here you can obviously there are functions related to string, but some functions that are general purpose functions can be applied here, right? For example, length. So if you want to find out how many characters are there inside the string, you can use the length function. Okay, so if I run this, you can see I get 5. Okay, so these functions, functions like len and all these things, so these are applicable to all the all the elements. Okay, so it is not specific to string or any other data type. Okay, so that is something you should understand. Okay, so, so once we know about this, now we are ready to understand the main data structures of Python. Okay, so there are 5 main data structures of Python. The first one is string that we already know. Okay, before we go ahead with the other 4, uh, there are primitive data types like int, float, string, and boolean. Okay, so these 4 we have already seen, right? Other than that, there are some advanced data structures. Okay, so that uh, that can be used to create complex representations. Okay, so basically let's suppose, why do we use these data structures? Okay, so basically there are 4 data structures that we have to learn. So first one is list, second one is tuple, third one is set, and the fourth one is dictionary. Okay, so these are the 4 data structures that we have to learn. Okay, now what is the use? When do we use these data structures? They all depend on what is the data that you are having. Okay, so based on your type of data, you may use different type of data structure. Okay, so usually you will go for list. Okay, because all your data that we are going to handle in all the programs, it will be basically only list. Okay, so once we understand these 4 data structures, it will be very helpful for us to write advanced programs. Okay, so now it is slightly difficult to understand, so you should concentrate it completely to understand this. Okay, now what is a list, what is a tuple, and what is set, and what is dictionary? Okay, so let's start with list. So let's call list L1. Okay, so you can give any name. I have given it L1. Okay, let's say I want to create an empty list. Okay, so for that you can use square brackets. Okay, so whenever you want to create a list, empty list, you use square brackets. Okay, so let us see how to create a empty tuple. Let's call it T1. Whenever you want to create a tuple, you use round brackets. Okay,
and let's call S1. Now I want to create an empty set. Okay, but unfortunately I cannot create an empty set using some brackets. Okay, I will tell you why. So let's come down to dictionary and then you will understand. Okay, so let's call it D1. And if you want to create a empty dictionary, you use curly braces. Okay, so you can see if you want to create an empty list, you use square brackets, tuple, round brackets, and dictionary, curly brackets. Okay, and the problem with set is set also uses curly braces. Okay, so that means you cannot do this. Okay, if you do this to create an empty set, then that simply means this is a dictionary, because dictionary bhi to aise hi hota hai na. So you cannot do this. Okay, so then how to create an empty set? With the help of this command. Okay, so with the help of this command you can create an empty set. Okay, similarly in these cases also you can create empty list with the help of list command. Okay, similarly you can create an empty tuple using tuple command. Okay, I'm just putting it inside comment so that you can know. And here you can use dict command. Okay, that is for dictionary. So for creating an empty list you have two options: either use empty square brackets or use list. For creating tuple you can use round brackets or this function. Okay, for set this function, and dictionary this or this. Okay, so now, so this is how you create an empty dictionary or empty list or empty tuple, right? But what is the use of such a empty list, right? So it is of no use. So let's see how to have some elements inside the list. So for that you just have to use the values separated by comma. That's it. Okay, so this is what this is how you create a list. Okay, so just values. So these values can be anything. It is not necessary that it should be integers. It can be all floats, it can be all integers, it can be all string, right? Maybe some names of your friends. Okay, so this can be one friend's name, this can be another friend's name. Only thing is it has to be in quotes. Okay, or if it can be a mix and match of anything. Okay, so you can have one integer, one float, one string, ऐसा कुछ भी जो आपकी मर्जी आए वो कर सकते हो. ठीक है. Now how to create tuple? Okay, so for tuple it is the same thing, only difference is instead of square brackets it is round brackets. Okay, and in case of set again it is the same thing. You can see. So here, obviously, I have to provide a list. I cannot directly convert it like this. Okay. Okay. So now once I have this, now I can also do a dictionary. Okay. So dictionary is slightly different. Okay. So for dictionary to work, what we have to do is we have to provide a key value pair. Okay. So in all these three cases that we have seen, so especially in these two cases, the position of L1 starts from 0. Okay, so this is 0 position, 0, 1, 2, and 3. Similarly here also 0, 1, 2, and 3. Okay, now what is the difference between a tuple and a list? That is very important. Okay, so what is the difference? So the difference is the most important difference is obviously the visual difference. The visual difference is what? It is using square brackets and this is using राउंड ब्रैकेट्स. बट क्या मतलब है? सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने के लिए एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना लिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना. So that means what?
there is something more to this, right? So what is the caveat over here? The thing is, lists are mutable, okay, and tuples are immutable. Okay, so what do you mean by immutable? So basically what it means is, once you create a list, whenever you want you can change the elements of the list. Okay, तो मुझे अभी ये 6 है, मुझे अभी मन किया इसको 8 कर दूं, तो आई कैन डू इट. ओके, बट वही चीज मैं टपल के साथ नहीं कर सकता. ओके, सो वंस द टपल इज डिफाइंड, I cannot change any element. Okay, so that is the rule. Okay, so let me show you. पहले मैं इसको और इसको कमेंट कर देता हूँ, so that doesn't bother us. Okay, let me show you quickly. So as I told you, list starts from index, whether it is a string, whether it is a list, whether it is a tuple. Okay, so all these things starts at index 0. Okay, so this is index 0, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, so if I want to access the sixth element, okay, sorry, not the sixth element, the sixth value of this list. Okay, so if I want to access that, I will just do L1 of 2. Okay, so if I do L1 of 2, so what is 0, 1, 2? So if I do L1 of 2 and if I try to print it, let me just print L1 of 2. Okay, so if I print it, you can see I get 6, right? So that is how you access an element, right? So that is fine. But if I try to change this value of 6 to, let's say, 8, okay, and now if I try to print L1, let's see what happens. Okay, so if I print, you can see previously the list was 4 5 6 7, but now you can see it is 4 5 8 7. Okay, so that means you can update the values of a list. Okay, so that is one thing to note. Okay, so let me comment this and let's try to do the same thing over here. Okay, so with the tuple, so if I try to access, let's say, print t1 of, again, to access whether it is a tuple, whether it is a list or a dictionary or a string, okay, anything, you always use square brackets. Okay, so that is what you should understand. Okay, so यहाँ पे बच्चों को बहुत confusion होता है कि list tuple कैसे define किया था, round bracket से, right? तो access करने के लिए भी round brackets use करना है नहीं. Okay, so whenever you want to access the data of any data structure, okay, whether it is string, list, tuple, dictionary, anything, you have to use square brackets. Okay, वो जो curly braces है, round braces है, वो सिर्फ defining के time है. Okay, so only when you define, you use this brackets. Okay, so when you want to access, it is square brackets, and the index is for 6, it is 2. Okay, sorry. So index is 2. If I run this, you can see I get 6. Perfect. Okay, so I can access it. So nothing different. Okay, so list भी वैसा ही है, tuple भी वैसा ही है, but difference यहाँ पे आता है. Okay, so if I come down and if I say t1 of 2 is equal to 8. Okay, so मुझे इसको change करना है, and let's try to print t1. Okay, so if I try to run this, you will see there is an error. Okay, so type error, tuple object does not support item assignment. Okay, so that means what? You cannot change the data inside a tuple. Okay, so that is the major difference between a list and a tuple. Okay, tuple में एक बार एक चीज गया तो उसको आप फिर change नहीं कर सकते. Okay, now the question is, what is the use of such a data structure which I cannot change? Okay, अभी ऐसे चीज का फायदा है क्या जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता? So if in your program you have a value which should not be changed, okay, so जैसे कि अभी ऐसे कौन सा वैल्यू हो सकता है, right? So ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं जैसे कि आपको if you ever start developing web applications, you will see that you have to after a while you will start
making websites where it is connecting to database and getting some data. Okay, so whenever you want to connect to a database, you need the username and password of the database. Okay, so database कोई भी ऐसे ही connect नहीं कर सकता, उसका username password लगता है. Okay, and the beauty is this username password does not change. Okay, so ऐसे चीजों को जो कभी change नहीं होते पूरे program में. Okay, so that we will store it inside a tuple, not a list. Okay, अगर हम लोग ने लिस्ट में स्टोर किया तो क्या होगा? लेट्स सपोज, मतलब एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सो लेट्स से डीबी. ओके, सो डीबी फॉर डेटाबेस, राइट? तो मैंने इस डीबी को, सो यूजर नेम है लेट्स से एडमिन एंड पासवर्ड है टेस्ट 123. ओके, सो ये है यूजर नेम एंड पासवर्ड. ओके, सो ये, इससे आप पूरा डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग इज वर्किंग, राइट? एंड योर प्रोग्राम इज लेट्स से 1000 लाइन्स ऑफ कोड. After a while, after 1000 line of code, you define a new variable. Let's say db is equal to, okay, something else. Or let's say आपको आपके दिमाग में आया नहीं और आपने किसी वेरिएबल का नाम ले लिया db, and if you say db of 0 is equal to, let's say, test. Okay, तो अभी क्या हो गया? आपका ये db वेरिएबल था ऊपर, राइट, जिसके अंदर एडमिन था और उसका पासवर्ड था, राइट? बहुत लाइंस ऑफ कोड के बाद, मतलब आपका जब प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली आप भूल जाते हो कि आपने कौन सा वेरिएबल का क्या टास्क लिया है, राइट? सो आपने फिर से सेम वेरिएबल यूज किया एंड उसको चेंज कर दिया, उसका वैल्यू टेस्ट कर दिया. तो क्या होगा? ये जो एडमिन है ये चेंज होके क्या हो गया? टेस्ट हो गया. सो आफ्टर दिस लाइन ऑफ कोड, अगर आपने फिर कोई भी डेटाबेस का कनेक्शन करने का ट्राई किया, कनेक्शन नहीं होगा, एरर देगा, राइट? बिकॉज आपका यूजर नेम ही गलत है, राइट? बिकॉज यूजर नेम आपका एडमिन होना चाहिए था, बट आपने क्या ले लिया? टेस्ट ले लिया, राइट? So that is the problem over here. Okay, so it is possible that you accidentally change something. Okay, so to avoid that, best option क्या है? Convert this into a tuple. Okay, simple, बस इतना सा काम करना है, जिसको राउंड ब्रैकेट्स करना है. Okay, so when you do this, by chance आपने ऐसा कर भी दिया, okay, तो आपने फिर से असाइन करके कोई नया वैल्यू डालने का ट्राई भी किया ना, तो कौन सा एरर आएगा? ये वाला एरर आएगा, राइट? वो आपको करने देगा ही नहीं, राइट? तो डेफिनेटली आपको ये निकालने के बाद ही आपका प्रोग्राम चालू होगा, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस. ओके, नाउ, okay, so let me comment this tuple also, and let's, so you have understood tuple, you have understood list and how to access it. Okay, so to access whether it's a tuple or a list, we go for the index. Okay, so we find out the index and we access it with the help of index in the square brackets. Okay, let's go for set first. Let's finish off set and then we will go to dictionary. Okay, so now what is a set? Now a set is same as a list, but which is not iterable. Okay, so we cannot not iterable, we cannot access the elements individually. Okay, so let me show you what I mean. So now you can see PyCharm is telling me that function call can be replaced with set literal. Okay, so what this means is that you can actually replace this entire thing with curly braces. Okay, so with curly braces you can set the what do you say, set. Okay, so you can create a set with the help of curly braces. The only thing I said is you cannot have an empty set. Okay, so empty set नहीं बना सकते आप. empty set बनाना है तो आपको set command यूज करना ही पड़ेगा. Okay, so that is must. Okay, but अगर आपको आपके सेट में कुछ वैल्यूज है
तो आप डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस यूज करो, और जैसे आपने लिस्ट और टपल बनाया वैसे ही आपका सेट भी बनेगा. ओके, सो दैट इज नॉट अ बिग डील. सिर्फ एम्प्टी बनाना है तो फंक्शन यूज करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके, सो नाउ वंस आई हैव दिस, so let's print the set. So let's print s1, okay, and see what is the output. So if I print s1, you can see वो तो सब print कर रहा है, right? Now let's suppose I want to access the this one, the third element. Okay, so the third element is at which index? Second index, right? Because this is 0, 1, 2. Okay, but one thing to note is you cannot access a set by its index. Okay, so let me show you. So if I try to access s1 of 2, okay, so let's run this. Can you see? So the set, you are getting an error. Set object is not scriptable. That means this is not allowed. Okay, so you cannot do something like this. Okay, so you cannot access a specific element inside a set. Okay, now what is a set? That is very important. ठीक है, तो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि लिस्ट और टपल में तो डिफरेंस पता चला, बट देन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लिस्ट में और सेट में क्या डिफरेंस है, राइट? डिफरेंस आपको तब पता चलेगा जब इसके अंदर थोड़े और वैल्यूज में डालूंगा. ओके, सो लेट्स ऐड अ फ्यू मोर वैल्यूज. Okay, so I have added two more values. Okay, now let us try to print the set. Okay, so if I try to print the set, can you see the difference? Set कभी भी सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही रेफर करता है, राइट? तो आपने एक वैल्यू 1000 बार भी डालोगे तो वो दिखाएगा आपको एक ही बार. ओके, सो यू कैन इमेजिन इन सी प्रोग्रामिंग, अगर आपको सेम चीज करना रहेगा, ठीक है, आपके पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज है और आपको यूनिक एलिमेंट्स निकालना है उसमें से, तो क्या करना पड़ता? आपको एक फॉर लूप मारना पड़ता, फिर इफ कंडीशन से आपको चेक करना पड़ता कि एग्जिस्टिंग है नहीं है. It's a complete big program, right? But here it's so simple that you just put it inside a list, sorry, you just put it inside a set, and you will get only the unique elements. Okay, so that is the best part of set. Okay, तो कोई भी एप्लीकेशन कभी भी, राइट, आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन लगा जिधर आपको यूनिक एलिमेंट्स चाहिए एक लिस्ट का, then you can convert that into a set. Okay, now obviously you will never create a set like this, right? It is a very bad idea to create something like this. ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसा बनाने का, right? तो इसका actual use मैं आपको बताता हूँ. Let's suppose I have this list with values like this. Okay, so I have a set with values, sorry, I have a list with values like this. Okay, that is L1. अब मुझे, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे L1 में से सारे यूनिक एलिमेंट्स निकाल के दो, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो L1 तो लिस्ट है, राइट? तो उसके लिए एकदम सिंपल है, यू जस्ट गो टू द सेट, ओके, एंड डू द सेट कमांड, and inside the set command you give the list. So list is L1. Okay, so what you're trying to do is literally converting the list to a set with the set command. Okay, so when you do this and if you print S1, let's see what happens. Can you see? 8 4 5 7. Okay, so in case of this you can see there is no repeated elements of S1. Okay, सो ये चीज बहुत काम में आने वाला है जब आप प्रोग्राम्स करना चालू करोगे, और ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए रहेंगे एंड आपको सिर्फ उसमें से कॉमन चीजें निकालने हैं, राइट? मतलब यूनिक चीजें निकालने हैं. सो दिस सेट विल बी अ यू नो a good thing for you. Okay, now one thing to note, can you see the order in which it is printing? क्या है? असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, क्या है?
सर फर्स्ट नॉन रिपीटेड वैल्यूज रहेगा, बाद में रिपीटेड वैल्यूज का दैट यूनिक वैल्यूज. नहीं, एक्चुअली कैसा है कि जो सेट रहता है, इट हैज टू, इट इज कॉल्ड एज एन अनऑर्डर्ड set of elements. Okay, so unordered set of elements, that means what, आप कोई भी ऑर्डर में दो, आपका आउटपुट का कोई गारंटी नहीं है कि कौन से ऑर्डर में आएगा. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, इधर आपका 8 4 5 7 आया है, ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ओके, इट इज समथिंग कंप्लीटली रैंडम. ओके, सो कोई भी इसमें आ जाएगा, राइट. बट द एडवांटेज इज दैट ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सेस द एलिमेंट्स. आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. सो अगर मुझे ये पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं ऐसा करने का ट्राई करूं S1 ऑफ 0, तो वो एरर देगा, राइट. व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस अ सेट. सेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता. तो अभी क्या ऑप्शन है मेरे पास, मुझे पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है. कैसे करूं मैं एक्सेस? So the idea is very simple. Okay, so can you look at these functions: list, tuple, the set function, and the dictionary function? Okay, now these functions are used to convert one data structure to another. Okay, so this is very important. So जैसे मैंने अभी set use करके क्या किया, list को set बनाया, वैसे ही आप उल्टा भी कर सकते हो, राइट. आप सेट को लिस्ट बना सकते हो, टपल को लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट को टपल बना सकते हो, राइट. तो अभी समझो मुझे ये L1 को टपल बनाना है, क्या करना पड़ेगा, टपल में ब्रैकेट के अंदर L1. ओके, सो लेट मी शो यू. सो इफ आई ट्राई टू प्रिंट L1, okay, so if I try to print L1, let's see, print. सो क्या प्रिंट हो रहा है, L1, ये L1 है. ठीक है, मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, तो ये L1 है अपना, राइट. बट ये लिस्ट की टपल है. कैसे पता चलेगा? सिर्फ ये देख के कैसे पता चलेगा, कोड देख के नहीं, सिर्फ ये देखना है मुझे. स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब वो लिस्ट हुआ. ठीक है, अब मुझे ये लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल, आई विल जस्ट राइट टपल and tuple of L1. So what it will do, it will convert L1, that is a list, to a tuple. Okay, so if I run this, can you see the difference? क्या हो गया, वो राउंड ब्रैकेट्स हो गया. तो ये लिस्ट जो पहले लिस्ट था वो अभी टपल बन गया. ओके, सेम वे आई कैन डू डायरेक्टली सेट, जो मैंने पहले भी किया, राइट. सो इफ आई डू सेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सेट. ठीक है, यहां तक तो ठीक है. Now let us come back. So now the question is, I want to access the set. So let's do list of S1, बराबर. So अगर मैंने ऐसा किया and now if I run it, तो मैंने क्या किया बेसिकली, देखो पहले लिस्ट था L1, इनिशियली वो लिस्ट था, उसको पहले आपने सेट कन्वर्ट किया. ओके, एंड वो सेट को आपने फिर से लिस्ट में कन्वर्ट किया. ओके, तो मतलब जो ध्यान नहीं दे रहा है उसको ऐसा लगेगा, अरे लिस्ट को सेट और वापस लिस्ट, फायदा क्या हुआ, है कि नहीं. फायदा ये हुआ कि जब आपने सेट में कन्वर्ट किया, everything, all the duplicate values are removed. Okay, and now you get back the list without any duplicate values. Okay, if I run this, you can see now I have square brackets. Also all the duplicate values are removed. Okay, अब ये list है मतलब क्या, I can access the elements, right. अगर मैं इसको अगर कोई वेरिएबल में स्टोर करूं और उसके बाद में एक्सेस करना है, तो वो वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में 0 डालूंगा तो ये मिलेगा, 1 डालूंगा तो ये मिलेगा, राइट, ऐसा. So let's look at the last one, that is dictionary. Okay, so dictionary is slightly different. Okay, now for dictionary to work, you need a key and a value. Okay, so your data should be in a pair, key value pair. Okay, so whenever you have
your data in a key value pair, you go for dictionary. Okay, so let me show you an example of what this key value pair looks like. Okay, so let's suppose you have a user's profile. So in that case, you will have a name. Okay, so this is the key, and separated by colon, and then the value, that is, let's say Shiburaj. Okay, so you can see this is how you write a set, sorry, not set, a dictionary. Okay, so in dictionary you will always have a key and a value, then key and a value. Okay, so that is how you always have. Okay, so if you want to have another key value pair, you just put comma and write the key. So let's say age, and let's say 33. Okay, so when you do this, your age is your key and the value is integer, and it is 33. Okay, so you can see the key um, is the first part and the second part is the integer. Okay, so this second part can be anything, it is not necessary that it has to be string. Okay, it can be float, it can be boolean, it can be integer, anything. Okay, so what I have done is, one element I have taken as string, another element I have taken it as integer. Okay, anything will do. So let's say is active. Okay, so this is the key, and the value I'm going to say true. Okay, so this one, the third one is boolean, right? So let me add little spaces, not important but still it looks better. Okay, so this is how you create a dictionary. Okay, now I will give you some examples and you tell me which data structure should I use. Okay, okay, so I want to store the marks of the students, okay, of a subject, uh, of all the subjects. Okay, I want to store the marks of only the marks. Okay, not the subject name, only the marks I want to store. So which data structure I will use? List, tuple, set, or dictionary? You can use tuple, absolutely fine, or you can use list, that is also fine, both will do. Okay, but if at all you are thinking of changing it, obviously in this case the marks are not going to change, so tuple is absolutely fine. Okay, and in fact is the best choice. Okay, I would say. Now, but if at all, let's suppose there was a grace mark option. Okay, so grace mark डालने का option चाहिए आपको, तब कैसे करोगे, है कि नहीं? तब तो टपल लोगे तो नहीं चलेगा, right? So, based on the application, you have to decide whether you want to use a list or a tuple. Okay. Now let me take another example. Okay. Now this time I want to save the marks along with the names of the subject. ऐसे केस में अपने को क्या लिखना है? डिक्शनरी यूज करना है, बिकॉज अगर आपने लिस्ट यूज किया तो आप उसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं स्टोर कर पाओगे. समझ में आया? क्योंकि आप सिर्फ उसको कितने मार्क्स मिले उतना ही स्टोर कर पाओगे, या तो क्या सब्जेक्ट है, या तो ऐसा ऑप्शन है कि एक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट्स का, एक लिस्ट बनाओ किसका, मार्क्स का. ओके, सो देयर विल बी टू डिफरेंट लिस्ट एंड देन यू हैव टू मैच विद द इंडेक्स. ओके, बट उसकी जरूरत क्या है जब डिक्शनरी है तो? सो डिक्शनरी में आपको की में रहेगा सब्जेक्ट का नाम और वैल्यू में रहेगा मार्क्स. दैट सिंपल. ओके, सो नाउ फाइनली before I finish up this particular topic, how to access the values of a dictionary, that is also very important. ठीक है, अभी मुझे समझो ये पर्टिकुलर D1 का नेम क्या है फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा? सो आई विल डू प्रिंट. ओके, and what is the name of the variable? D1. Okay, D1. And now I have, as I told you, whenever you want to access any value you have to use square brackets. Okay, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो या टपल हो या डिक्शनरी हो, कहीं भी हो,
आपको अगर वैल्यूज एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है, सिंपल। ओके, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स डालते हैं ना, 0 1 2 3 4 ऐसा, बट यहाँ पे डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं डालते, डिक्शनरी में हम लोग की डालते हैं। ओके, सो व्हाट इज द की? सो अगर आपको नेम पता करना है तो की क्या है, नेम। ओके, सो आई विल जस्ट यूज स्ट्रिंग नेम। ओके, that's it. So if I try to print it, you can see I get Shiburaj. Okay, so if I want to find the age, so I will do d1 of age. Okay, so if I run this, I get 33. Okay, so this is how you access the values of a dictionary. Okay, so यहाँ पे और बाकी सब में, चाहे वो string हो, list हो, tuple हो, इतना ही फर्क है कि whenever you want to access, ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट्स तो यूज करना है, बट अंदर जो आप डालने वाले हो वो डिक्शनरी में की का नाम होता है और बाकी सब में इंडेक्स होता है। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी ऑल दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज द इंडेक्स। ओके, सो टपल को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग को एक्सेस करना है या लिस्ट को एक्सेस करना है, यू हैव टू यूज द इंडेक्स। ओके, बट डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो यू विल यूज द की। ओके, let's look at this example, very easy. हार्डली 5 मिनट लगना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस प्रोग्राम सब खत्म हो गया है तो ये सिर्फ हार्डली 5 मिनट लगेगा। ओके, सो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम and average of a list of numbers entered by the user. Okay, the average should be approximated to 1 decimal places only. Okay, so that is also an important statement. Okay, so let us look at the input format. Okay, so input, this is a sample input. So input will be something like this. So 1 2 3 4 5 6 or maybe any other number. Okay, so you can see all the different numbers that I'm putting, right? एंड द आउटपुट शुड बी एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सम 21। ओके, सो 21 आउटपुट करते हैं, 3.5 आउटपुट करते हैं, वैसा नहीं, इट हैज टू बी सम इक्वल टू 21। तो ये जो स्पेसिस है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट करना है, राइट? नाउ बिफोर आई गो अहेड एंड first of all, I will do a quick revision of how to take input वगैरह, right? Because I know 2 week हो गया है, right? So आप लोग हो सकता है भूल गए हो. So let me show you how to take an input. So to take an input, you have to use input command. Okay, so when you do input command, you get a string as the as a return. Okay, so you get string, but in our case, you're getting a string, but that string has the numbers in one line. Okay, it is not on separate line. अगर separate line में होता, मतलब 1 2 3 4 नीचे 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 होता, तो हम लोग क्या करते थे, S1 फिर नीचे S2 is equal to input, ठीक है, S3 इक्वल टू इनपुट, S4 इक्वल टू इनपुट, ऐसा करके लंबा चौड़ा इनपुट लेते थे। ठीक है, सो दैट इज इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, बट हम लोग का इधर इनपुट कैसा आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है पूरा। ठीक है, सो एवरीथिंग इज इन वन लाइन and it is separated by space. Okay, so you can see it is separated by space, right? So हर एक इनपुट हर एक नंबर के बीच में एक स्पेस है. So now you must have understood how will I separate them. Okay, so to separate them I will use split. Okay, without any parameter. Okay, because if you do not put any parameter, default is space. Okay, so space से वो कर लेगा. ठीक है, तो अभी इनपुट तो आ गया, right? Now what? So the next step is to convert. Now I want to take sum, right? और sum अब ये करके दिखाना पड़ेगा मुझे तो आपको समझेगा. So let's do print s. Okay, so if I run this, okay, it's waiting for something. Let's say 4 5 24. Okay, 4 5 3 24 मैंने enter किया. If I do enter, can you see I'm getting, what is this?
Is it a set? Is it a tuple? Is it a list? What is it? It's a list. Okay, तो यहां तक तो समझा. It's a list. Now, can I take the sum of each elements of this? Is it possible to take a sum of this? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, so आप ले सकते हो, but फिलहाल ले सकते हो, but not right now. Do you know why? Because what is this? Yes, You it have to is a string. So that means what? think I cannot add it. Okay, right now I cannot add it. So मेरे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? typecasting. Yes, I have to cast. I have to first convert the string into integer. Okay, so then I can do addition, right? तो कैसे करते हैं? सिंपल है. अभी क्योंकि ये S वाले S लिस्ट में है, तो मैं एक सिंपल सा टेक्निक यूज कर सकता हूं, राइट? सो S ऑफ 0 इज इक्वल टू इंट S ऑफ 0, राइट? तो ये मेरा एक एलिमेंट इंट हुआ, राइट? पिछले बैच में एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया था, सर व्हाई नॉट आई डू दिस, है कि नहीं? इंट ही करना है ना, तो पूरे सबका पूरे लिस्ट को ही इंट कर देता हूं. वैसा नहीं होता है, ठीक है? यू कैन नॉट, इंट एक्सेप्ट्स ओनली वन स्ट्रिंग, it does not accept an entire list. Okay, so that is the limitation of int. Okay, so int function क्या करता है? सिर्फ एक string को ही accept करता है. It cannot accept an entire string. So ये जो टेक्निक है ये फेल होगा, राइट? तो इससे आप नहीं कर सकते, तो ये मैं हटा देता हूं. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक एलिमेंट को करना पड़ेगा, राइट? सो आपने एक एलिमेंट को किया, अभी ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट को करोगे. सो S1, उसके बाद थर्ड एलिमेंट को करोगे, ठीक है? 2 2. Okay, so let's see if I run this 4 5 6. If I press enter, can you see I'm getting the answer? Okay, now there is no codes. So अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ. ऐड कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, बट एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि ऐड कर सकते, राइट? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? किसी को पता चल रहा है प्रॉब्लम क्या है? So if inputs are more, then we can do यस, session. अगर इनपुट ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, है कि नहीं? अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तीन ही इनपुट रहेंगे, मतलब तीन ही इंटीजर्स रहेंगे, बट व्हाट इफ देयर आर मोर, राइट? सो इस केस में ये जो लॉजिक है ये वर्क नहीं करता है. एक एक एलिमेंट को इंट करने का लॉजिक वर्क नहीं करता है. सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ सोल्यूशन. So the solution is very simple. It's another function. It is called the map function. Okay. So I will show you. थोड़ा सा ध्यान देना तो समझेगा ये easily. ठीक है? So this is called the map function. Map function में it requires two things. Okay. First thing is what function you want to run. Okay. So I want to run int function. ठीक है? Without the brackets. You don't have to put the round brackets. सिर्फ function का नाम बता दो बस. And second is what on which list you want to apply this. Okay, so I want to put it on list S. Okay, so अभी ये map function करता क्या है? So map function करता ये है जो हम लोगों ने इससे पहले किया था ना. एक मिनट, I will just cut this. ये जो किया है ना हम लोग ने, it is equivalent to this. Okay, only thing is ये हर एक एलिमेंट को करेगा, ठीक है? तो ये जो मैं कर रहा हूं यही चीज ये भी करता है, ठीक है? तो बेसिकली इसका फंडा ऐसा है कि इट विल सी दैट एस इज अ लिस्ट. ओके, सो एस इज अ लिस्ट. सो वो एक एक एलिमेंट को लिस्ट में से लेगा और ये फंक्शन में पास करेगा एंड उसका आउटपुट देगा. ओके, सो दैट मीन्स पहले वो S0 लेगा, इंट में देगा, उसका आउटपुट देगा. फिर S1 लेगा, इंट में देगा, उसका आउटपुट देगा. S2 लेगा, जितने भी एलिमेंट्स है सबको लेगा एक एक करके और उसका आउटपुट देगा. ओके, सो नाउ आवर जॉब इज टू प्रिंट और बेसिकली save it in somewhere. Okay, so let's call it M1. Okay, so let's call the variable M1. So now let us try to print M1 and see.
what happens. Okay, so let's run this. 4 5 6, ठीक है, मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दिए. Now if I press enter, let's see what happens. Okay, so can you see what happened? What I'm getting is slightly different. Okay, so I'm getting a map object. I'm not getting the answer directly. I'm getting a map object. Okay, so that is what the output of map is usually. Okay, so output of map is always a map object. Okay, now I can use it directly, but it would be better if I directly pass this to a list function. ओके, तो मैंने क्या किया, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा. ठीक है, तो पहले लिस्ट को भूल जाओ. ठीक है, पहले मैंने क्या किया, मैप फंक्शन रन किया, उसमें दो पैरामीटर है. दिस इज व्हाट फंक्शन आई वांट टू रन एंड आई वांट टू रन इट ऑन एस. ओके, एस इज अ लिस्ट, राइट. अब वो होने के बाद वो मैप ऑब्जेक्ट देता है. वो मुझे मैप ऑब्जेक्ट ज्यादा काम में नहीं आने वाला, इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा. ओके, so now m1 is something that I can use. Okay, so let me show you. So if I run this, no wait, I will just stop it. Okay, so okay, so let me print both the things so that you know the difference. Okay, so let me print s as well as m1. Okay, so you will get the data better. Okay, so I have such a long list of values. If I press enter, let's look at the output. Okay, so this is s. जो मैंने s print किया ना, वो है ये. Okay, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो भी values है उसके अंदर single quote है. That means what? Those are strings. Okay, but look at this. ये map function में run होने के बाद का output है, right? So उसमें क्या किया उसने? It converted everything to integer, not string. Okay, so ये अपने को चाहिए अगर sum निकालना है तो. Okay, now is the most important part. sum कैसे निकाले, right? अगर C प्रोग्रामिंग होता तो यहाँ पे एक for loop लगता, right? बट ये तो पाइथन है, तो यहाँ पे चीजें सिंपल होने चाहिए, right? So there is a very simple function. I will show you three functions. For different purposes you can use it. First function is max. Okay, so let me just now I don't want to put the input again and again, so I will just say m1 is equal to, okay, so this is m1. ठीक है, मुझे बार बार ये इनपुट नहीं देना था, इसके लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया. ठीक है, सो m1 अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ऐसा आउटपुट आ रहा है फिलहाल. ओके, बट व्हाट आई वांट इज max of m1. Okay, so I will show you three functions. One is max, one is min, one is sum. Okay, so these three functions are there. अपने को ये वाले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही फंक्शन लगेगा, बट आई वांट टू शो यू ऑल द थ्री. इफ आई रन दिस, कैन यू सी when I do max function, it takes the list and finds out what is the maximum value of it. So you can see 7. Okay, यही चीज अगर आपको C में करना होता तो अगेन आपको एक फॉर लूप लगता, आपको चेक करना पड़ता कौन सा बड़ा है वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा प्रोसेस था, राइट? बट पाइथन में देयर इज अ डायरेक्ट फंक्शन मैक्स और उससे आपको मैक्स नंबर मिल जाता है, राइट? सिमिलरली यू हैव मिन 2, right? And finally the thing that we need in this program, sum. बस सिंपल, आपको सिर्फ सम मारना है सारे एलिमेंट्स का, तो सम फंक्शन रन करो एंड यू विल गेट दिस सम. दैट्स इट. ठीक है, एंड फाइनली कैन एनीबॉडी टेल मी, सम तो मैंने बता दिया, अभी एवरेज कैसे निकालोगे? सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो सम तो मिल गया, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? लेंथ फंक्शन से काउंट वाला नहीं, काउंट से अपने को वो एलिमेंट कितनी बार है वो पता चलेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने समझो
m1 डॉट काउंट किया, ठीक है, एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट 4, ओके, सो m1 डॉट काउंट 4, तो वो मुझे बताएगी 4 कितनी बार है, ठीक है, 2 बार, दैट विल बी आउटपुट ऑफ दिस, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट, ओके, व्हाट आई वांट इज I want the total length of this. Okay, so total length के लिए the command is len, right? len of m1, right? So इससे अपने को average मिलेगा, right? And obviously this is not enough, right? So you also need one more thing, that is approximated to 1 decimal places only. और ये हम लोग ने print के टाइम किया था, आपको याद रहेगा तो 0.1f करके हम लोग करते थे, याद है? सो वो 0.1f से आपको ये 0.35555 रहेगा, तो सिर्फ 0.35 करना है, ओके ओके. सो टास्क 8 इज एब्सोल्युटली वेरी सिंपल. सो what task 8 does is, again you are taking an input from the user, space separated, and you just have to convert it into a list, a tuple and a dictionary. That's it, very simple. Okay, so आपको जो भी इनपुट दिया रहेगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर टपल में कन्वर्ट करना है, और फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है. ओके, सो नाउ दिस इज वेरी 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 ट्रिकी. ओके, so let me remove this and uncomment this. Okay, so यहाँ तक तो ठीक है, इनपुट लिया, उसको स्प्लिट किया, एस में स्टोर किया. ओके, सो व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट दिस, जब मैं स्प्लिट करता हूँ तो उससे लिस्ट ही तो बनता है, राइट? तो मेरा पहला वाला टास्क तो ऐसे ही हो जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लिस्ट ही बनता है नॉर्मली. ओके, सो इफ आई प्रिंट इफ आई रन दिस एंड इफ आई रन इट, कैन यू सी लिस्ट तो मुझे वैसे भी मिल रहा है. ओके, सो दैट इज नॉट एन इश्यू. द इश्यू इज द नेक्स्ट टू. ओके, सो आई वांट टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ टपल. कैसे करूंगा वो भी आपको पता है, यू जस्ट रन थ्रू द फंक्शन टपल, राइट? तो उससे अपना टपल भी बन जाएगा. ठीक है, कूल, टपल बन गया, राइट? बट लास्ट वाला है सबसे डिफिकल्ट. लास्ट वाला क्या है? डिक्शनरी. ओके, ना क्यों डिफिकल्ट है मैं बताता हूँ. ओके, सो यू वुड थिंक दैट DICT मारने से मेरा डिक्शनरी बन जाएगा. ठीक है, मतलब लिस्ट है आपके पास और DICT मारने से आपका डिक्शनरी बन जाएगा. दिस इज व्हाट यू मे थिंक. ओके, सो लेट अस रन इट एंड सी. सो इफ आई रन दिस and 453 डाला, and if I press enter, can you see? No, it doesn't work. Okay, so I cannot make a dictionary directly from a list. Okay, why? Can anybody tell me why I cannot make a list, sorry, a dictionary from a list directly? Yes, डिक्शनरी में format. की भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लिस्ट में सिर्फ वैल्यू होते हैं, की किधर है कि नहीं? तो लिस्ट में की नहीं है, बट डिक्शनरी में यू नीड बोथ द थिंग्स, की एज वेल एज वैल्यू. तो अगर वो नहीं है तो आपका डिक्शनरी नहीं बन सकता, राइट? तो आप लोग ये सोचोगे कि भाई इसमें इंडेक्स तो होता है, लिस्ट में इंडेक्स तो होता है, राइट? तो क्यों नहीं इंडेक्स यूज करके बना सकते? डिक्शनरी को बना सकते, बट नॉट डायरेक्टली. ओके, सो फॉर दैट देयर इज वन मोर स्टेप दैट यू हैव टू डू. ओके, सो दैट आई विल शो you. So for that I will just do enumerate. So this is the function that you need to run. Okay, so this function is required to convert that, index into key. ऐसा समझो, ठीक है? जो s के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4, उसको अगर आपको की में कन्वर्ट करना है तो ये enumerate लगता है. ओके, so let me show you. If I try to print this, ओके, सो यू कैन सी जैसे मैप ऑब्जेक्ट का आउटपुट आया था वैसे ही इसका भी आउटपुट आ रहा है. क्या आ रहा है? एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट? तो इसको हम लोग विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, राइट? मतलब इसका इसमें मतलब क्या है डेटा वो तो समझ में नहीं आ रहा है, राइट?
एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट है, सो इसको हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, राइट? देखना है, अगर विजुलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ विजुलाइज करने के लिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जैसे मैप में भी सिर्फ विजुलाइज करने के लिए हम लोगों ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया था, वैसे ही सो इसको भी लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, so that we can see what is inside the enumerate. Okay, so इसको अगर मैं रन करूं अभी, you will see a beautiful thing what happens. Can you see what has happened? enumerate function ने क्या जादू किया देख रहा है? उसने क्या किया, वैल्यूज को उसने लिस्ट बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो लिस्ट तो बनाया, दैट इज गुड। उसके अंदर देखो क्या किया, उसने टपल बनाया है, ठीक है? और वो टपल के अंदर क्या है देखो, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, राइट? So now because of this, now you can convert it into a dictionary. Okay, so अभी इसमें उसने क्या, इधर की वैल्यू कैसे फाइंड किया उसने, ये जो वैल्यूज है वो उसने सेकेंड पैरामीटर लिया, और उसका जो भी इंडेक्स रहता है, मतलब अभी इसका इंडेक्स 0 था, राइट? तो उसने वो एज अ की ले लिया। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस wonderful function has done, enumerate. Okay, so enumerate ने ये जादू करके दिया। okay, once this is done, अब डिक्शनरी बनाना तो बहुत इजी है। ओके, सो अब ये लिस्ट की भी जरूरत नहीं है, लिस्ट तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया था। सो नाउ यू जस्ट हैव टू डू DICT। ओके, सो एन्यूमरेट के ऊपर आप डिक्शनरी करोगे तो आपको मिलेगा आपका डिक्शनरी। कैन यू सी? सो आई हैव my list, I have my tuple, and I also have my dictionary. Okay, is it clear till here? So now you can try to attempt this. Okay, attempt this program, task number 8. So task number 9. So task number 9 is uh, slightly um, in fact it is very easy, I would say, but there are two things that I am going to show you that you will not be knowing. Okay, so first I will explain you what this problem is, and then uh, you can, I will explain you what things you need to know to complete this. Okay, so first step, first thing is I will be giving you a dictionary. That is the first thing. Okay, so this is the dictionary. Okay, so when you open the code, you already will be having this written in your code. Okay, so this is the dictionary I am giving you. What is this dictionary? This dictionary is a profile of a student. Okay, so the profile has name, age, email, and password, 4 fields. Okay, so what this program is doing is, this is like a update profile page. Okay, so just imagine that you have a website, and you want the users to update their profile fields. Okay, so edit their profile fields. So you can see you have name. So let's suppose I want to edit the name. Okay, so the way this is going to happen is, the input is going to be in this format, fixed. Okay, so this is the fixed format that I am going to provide you. Okay, so the first part of the input, it will be one line, and the first word will be the key, the second word will be the value. Okay, so there will be two words that I am going to provide you, separated by space. Okay, so whenever, always remember, whenever you get an input separated by space, immediately इतना समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे split करना है. Okay, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि split करना है, right? So first you will take an input, split it. So when you split it, you will get two parts. One part will be having password, but that means the first part, and the second part will be having the value. Okay, so this will be the key, this will be the value. Okay, so I will just show you, and let's suppose I have this dictionary, right? So okay, so this is a dictionary. So I want to update the uh, name field. So how will I update? Can anybody tell me? I want to change Shibu to Raj. Okay, so how will I do it? Can anybody tell me?
convert to list. Okay, that is a very good thing. Let us see if I can actually convert this into list, or what happens when I convert into list. Okay, so let's run list of s and see what happens. Okay, so let's run this. Okay, so I get what? I get only name. Okay, so let me add few more elements so that it is clearly understood. Okay, so I've added this. Now if I run this, can you see what is happening? When I convert a dictionary to a list, it has completely removed the values from the picture. Okay, so that is the obviously that was an obvious step, right? Because a list can have either the keys or the values, right? It cannot have both, right? डिक्शनरी के अंदर दो चीज होते हैं, की भी होता है, वैल्यू भी होता है, बट लिस्ट तो एक ही चीज स्टोर कर सकता है, राइट? सो उसने क्या स्टोर किया? की स्टोर किया, वैल्यू स्टोर नहीं किया. तो क्या करने का? तो क्या मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूं? यस, यू कैन स्टोर द वैल्यूज, बट फॉर दैट यू विल नीड टू यूज एस डॉट वैल्यूज. ओके, सो ये फंक्शन करना पड़ता है, एस डॉट वैल्यूज. तो उससे आपको शिबू और 33 मिल गया. ओके, एंड इफ यू डू एस डॉट कीज, ओके, यू विल गेट नेम एंड एज जो डिफॉल्ट है. ओके, and if you do s dot items, okay, if you do s dot items, तो ये तीन चीज डिक्शनरी में याद रखना, कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स. कीज से कीज मिलेंगे, वैल्यूज से वैल्यूज मिलेंगे, और आइटम से दोनों मिलेंगे. ओके, सो लेट मी शो यू. सो इफ आई रन दिस, कैन यू सी आई एम गेटिंग अ लिस्ट and it is converted into a tuple, okay, of name and shibu. Okay, so name is the key, shibu is the value, then again another tuple, age is the key, and 33 is the value. Okay, so you can see, you can do it, you can convert a dictionary into a list, provided you do this. Okay, directly possible nahi hai, again remember. Okay, so wo to theek hai, that is fine, but this is not what I want in this particular experiment. In this particular experiment I want to update the name to Raj. Okay, so kaise kare? Do I really need to convert it into a list? देखो, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि टपल को मैं एडिट नहीं कर सकता. सेट, सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है, बिकॉज सेट cannot be directly accessed. That's why I converted into a list to access it. But list and dictionary can directly be accessed. Okay, so उसके लिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो आई कैन एक्चुअली एक्सेस लाइक दिस. सो आई कैन डू स्क्वायर ब्रैकेट्स name. Okay, so I can do this is equal to, let's say, Raj. Okay, so ये सिंपल स्टेटमेंट से मैंने इस डिक्शनरी का की को ये पर्टिकुलर की का वैल्यू चेंज कर दिया राज से. ओके, सो इफ आई रन दिस, कैन यू सी? So now the name is Raj. Okay, so this is very important to understand, that whenever you want to change the elements of a dictionary, you can do it directly. Okay, so now once you know this, can you tell me how to do this? So let me show you. So this is, suppose, the dictionary, right? And I am taking an input, let's say x is equal to input, right? Input dot split. ठीक है, तो मुझे क्या मिला? लेट्स से x प्रिंट करके देखते हैं. प्रिंट किया मैंने, सो नेम शिबू. ओके, सो मैंने नेम शिबू प्रिंट किया, एंटर किया. कैन यू सी? आई एम गेटिंग टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट की इज नेम, द सेकेंड इज शिबू. ओके, तो मुझे अभी क्या करना है? ये डिक्शनरी को ऐसा करना है, राइट? जिसके अंदर यहाँ पे
की आना चाहिए और यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो की किधर है, की किधर है और वैल्यू किधर है? तो सर ये तो लिस्ट है ना सर, जो हाँ नेम और शिबू आपने तो लिखा हाँ है। हाँ, उसमें से की क्या है और वैल्यू क्या है? सर की तो नेम हो जाएगा ना सर। यस, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? सर इन केस ऑफ लिस्ट रहेगा तो सर एलिमेंट लिखते ना, और डिक्शनरी में रहेगा तो सर नेम, डायरेक्ट नेम ही लिखेंगे। हाँ ये तो लिस्ट है, तो इसको मैं, मेरे को ये एक्सेस करना है नेम, तो कैसे एक्सेस करूंगा? तो करेंगे ना सर, क्या? ब्रैकेट में जीरो आएगा ना सर। यस यस यस, एस ब्रैकेट एग्जैक्टली, में जीरो आ जाएगा ना सर। यस, एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, अभी की आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? पासवर्ड, सर पासवर्ड क्या? यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट डालना है, सेकेंड वाला जो भी आएगा, तो वो क्या रहेगा? एक्स ऑफ वन, ठीक है। एक्स ऑफ जीरो की था मेरा, एक्स ऑफ वन मेरा वैल्यू था, राइट, बराबर ना। तो मैंने की यहाँ पे डाल दिया, वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू को ये पर्टिकुलर की इन दिस डिक्शनरी में रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट। सो इफ आई प्रिंट द डिक्शनरी, अभी देखो कैपिटल एस शिबू है, राइट। सो इफ आई रन नाउ, लेट्स से क्या एज चेंज करके देखते हैं, ठीक है, एज 45, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, की मेरा एज है और वैल्यू मेरा 45 है। सो देखते हैं वो वाला पार्ट अपडेट होता है कि नहीं। इफ आई प्रेस एंटर, कैन यू सी, नेम वही है सेम, बट एज देखो क्या हो गया, अपडेट हो गया ना। पहले 33 था, अभी 45 हो गया, राइट। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। नाउ इतना क्लियर हुआ ये कैसे किया मैंने? एनी डाउट्स? नो सर। सर पर डायरेक्टली भी कर सकते ना, अगर डिक्शनरी दिया तो डायरेक्ट मैंने एस ऑफ एज लेके इक्वल्स टू, वैसा भी कर सकते ना सर। नहीं समझा, नहीं कैसा? सर आपने बोला ना डिक्शनरी में चेंजेस करना है तो एस ऑफ हाँ, डिक्शनरी में सेमी, चेंजेस करना है तो हाँ। आप डायरेक्टली इसको ऐसा करके, ऐसा ना। हाँ यस सर, यस यस। अरे बट यही तो फिक्स नहीं है, कौन सा की चेंज करना है ना वही फिक्स नहीं है, वो आएगा इनपुट से, यस सर। समझ में आया? तो आई कैन नॉट स्टैटिकली टाइप दिस, इफ आई स्टैटिकली टाइप दिस देन हमेशा वो नेम ही चेंज करेगा, ठीक है। जस्ट सपोज आपने ये किया और मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने अभी एज चेंज किया ना, एज लेट्स से 45 किया, तो देखो क्या होगा, क्या चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, राइट। एज नहीं चेंज हुआ, नेम चेंज हो गया। वाई? बिकॉज आपने इधर स्टैटिकली नेम टाइप कर दिया, राइट। तो हमेशा आप कुछ भी डालो वो नेम ही चेंज करेगा हमेशा, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं इनपुट दूंगा कि कौन सा की चेंज करना है और उसका नया वैल्यू क्या है, दोनों भी मैं दूंगा, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो दिया, दैट इज द की, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला की है, और एक्स ऑफ वन मेरा वैल्यू है, जो सेकेंड पैरामीटर आ रहा है वो मेरा वैल्यू है, राइट। तो मैंने ऐसा इसको रन किया, तो क्या हो रहा है, मेरा डिक्शनरी अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो इफ आई रन दिस अगेन, लेट्स से एक कुछ नया ही डाल देते, जेंडर मेल, ओके, नया डाल दिया मैंने। अब देखो क्या होता है, कैन यू सी, वो तीनों के तीनों फील्ड आ गए, नया फील्ड और एक ऐड हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी स्पेशल and very important concept in Python that is called as unpacking. Okay, unpacking
बहुत जगह यूज होता है और आगे जाके बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे भी। जब हम लोग बड़े बड़े लाइब्रेरीज यूज करेंगे ना, तो वहां पे अनपैकिंग बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। सो लेट मी शो यू व्हाट इज अनपैकिंग। ओके, सो वेन एवर यू हैव अ लिस्ट, okay, list or a tuple on the right, you can unpack it directly to variables। okay, so let for example, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको एक लिस्ट दे रहा है, राइट। जब ये आपको लिस्ट दे रहा है और आप उसको क्या किस में स्टोर कर रहे हो, एक्स में स्टोर कर रहे हो, राइट। अब उसको क्योंकि वो लिस्ट है तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन लेना पड़ता है, राइट। बट दिस इज ऑब्वियसली नॉट रीडेबल। ओके, मतलब अगर कोई फ्रेंड को आप अपना कोड भेजते हो तो ये क्या लिखा है आपने, एक्स ऑफ जीरो क्या है, एक्स ऑफ वन क्या है, राइट। दिस इज नॉट द गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ओनली यू एज अ डेवलपर नो कि ये एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन क्या है, की वैल्यू पेयर है, राइट। बट कोई थर्ड पार्टी कोई इसको रीड करता है कोड को, तो उसको तो समझेगा ही नहीं एक्स ऑफ जीरो क्या है, एक्स ऑफ वन क्या है। तो वैसे केसेस में व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू अनपैक द डेटा। ओके, सो अनपैकिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर अनपैकिंग द डेटा यू नीड टू हैव a predetermined number of elements on the right। okay, so यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब I am always entering two values। okay, so one key one value, की वैल्यू कभी भी मैं इनपुट दूंगा दो वैल्यू ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन अनपैक इट नाउ। ओके, सो हाउ टू अनपैक, सो आई कैन से लेट्स से की कॉमा वैल्यू। ओके, की कॉमा वैल्यू, इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि की वैल्यू होना चाहिए, आई कैन से D1 कॉमा D2, या तो कुछ भी कोई भी नाम दो, आपके ऊपर है, बस दो नाम दे दो, ठीक है। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि दिस विल बी मच मोर रीडेबल। ओके, सो राइट नाउ इट इज नॉट रीडेबल बिकॉज D1 में और x ऑफ जीरो में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। टू मेक इट रीडेबल यू गिव सम नेम्स विच इज मोर लॉजिकल। ओके, सो जैसे कि मैं इधर दूंगा की और इधर दूंगा वैल्यू, ठीक है। और अब ये क्लियरली समझ में आता है कि भाई ये क्या है, राइट। तो ये रहेगा की, ये रहेगा वैल्यू, राइट। सो ये जो स्प्लिट होगा इसके अंदर से पहला एलिमेंट जो रहेगा वो की में जाएगा और दूसरा एलिमेंट जो रहेगा वो वैल्यू में जाएगा। ओके, सो टू मेक दिस अ लिटिल बोट मोर क्लियर, so let me take an example, a comma b, sorry, b comma c, if it is equal to, if I take a list of 3 comma 4 comma 5। okay, so ये मैंने लिस्ट लिया, so this is called as unpacking। तो ये अनपैकिंग के रूल में क्या होता है, देखो ये 3 किधर जाएगा, ए में जाएगा, 4 किधर जाएगा, बी में जाएगा, और 5 किधर जाएगा, सी में जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपने कम एलिमेंट्स दिए और यहाँ पे ज्यादा निकले तो भी एरर, और अगर आपने एक एक्स्ट्रा दे दिए तो भी प्रॉब्लम। ओके, सो ये चीज कब यूज करने का, अनपैकिंग वाला कंसेप्ट, व्हेन यू आर श्योर द नंबर ऑफ list items is going to be fixed। okay, so in our example it is fixed always 2। okay, so इसके लिए मैंने क्या किया, उसको ये दो नाम के वेरिएबल से अनपैक किया। okay, ये नाम कुछ भी हो सकता है, आप आपके हिसाब से जो नाम चाहिए वहां पे दे सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे की और वैल्यू दिया। अब एक बार मैंने की वैल्यू दिया तो इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन, मैं यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू दूंगा। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट इट, doesn't this look bit more readable than the previous version। ओके, सो इसलिए हम लोग अनपैकिंग का जब भी मौका मिले यूज करने का, ओके, मतलब अपना फर्स्ट पार्ट जो है प्रोग्राम का, दैट मीन्स टेक एन इनपुट, स्प्लिट इट, देन रिप्लेस और अपडेट द प्रोफाइल। ओके, सो उतना पार्ट हो गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। यू हैव टू प्रिंट द अपडेटेड प्रोफाइल, सो दिस इज एक्चुअली योर आउटपुट। ओके, सो यू हैव टू प्रिंट द अपडेटेड प्रोफाइल। सिर्फ एक नॉर्मल प्रिंटिंग होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट
just look at it. What is so special about this print command or this output? Key to look at the alignment. They are all properly aligned one below the other. ठीक है, ऐसे लाना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने सीखा, एक तो अनपैकिंग और एक है परफेक्टली अलाइन कैसे करने का है. ठीक है, आउटपुट को. एंड थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज ये कैसे लाने का. ठीक है, ऑब्वियसली पासवर्ड में जितने कैरेक्टर्स है उतने ही स्टार आने चाहिए यहाँ पे, वो कैसे करोगे, राइट. So these are some of the things that we are going to learn. Okay, yeah, exactly, Faisal. We are going to hide the password. So how we are going to see? Okay, so I'm going to show you all these things. So okay, so till here that was part 1. Okay, so यहाँ तक ठीक है. अब part 2 that is the output. ठीक है, अभी आउटपुट देखते हैं. तो आउटपुट में तो सिंपल है, पहला लाइन तो एकदम ही सिंपल है, सिर्फ प्रिंट ही करना है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं. सेकेंड लाइन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ठीक है, सो लेट्स प्रिंट इट. Oh, sorry, I will print this. Okay, remove this. Okay, and the way you print it is completely up to you. Okay, I don't need you to follow any specific method. It is completely your choice. जो भी आपको पसंद है वो यूज करो. मैं मेरा फेवरेट बता रहा हूँ. ठीक है, सो माय फेवरेट इज F वाला. आई यूज F. देन जहां भी मुझे जो भी वेरिएबल से रिप्लेस करना है वहां पे मैं कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ. ठीक है, तो मुझे इतना स्ट्रिंग डालना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे वो वैल्यू से रिप्लेस करना है, और वो वैल्यू किधर है, एस के अंदर, राइट. सो एस स्क्वायर ब्रैकेट्स और कोट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने स्मार्टली क्या किया, सिंगल कोट्स यूज किया, डबल कोट्स यूज नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि डबल स्टार्टिंग में कोट्स, बोला था. हाँ, जब भी आपका आउटर डबल कोट है तो अंदर कभी भी आप क्या करोगे, सिंगल कोट्स लोगे. ठीक है, सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. ओके, सो ये मैंने सिंगल कोट लिया और उसके अंदर मैंने कौन सा की डाला, नेम. ओके, सो नेम. सो दैट विल प्रिंट माय आउटपुट. ओके, सो फिलहाल के लिए मैं ये इनपुट और ये जो रिप्लेसमेंट है ये थोड़ा कमेंट करता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स रन इट. Okay, so you can see I'm getting this output. Perfect. Okay, but ये नहीं है जो मुझे चाहिए. मुझे चाहिए क्या, मुझे ऐसा चाहिए, मतलब aligned to the right. Okay, and this size is also fixed. कितना साइज बोला है मैंने, वन कंप्लीट लाइन का साइज है 40 कैरेक्टर्स. ओके, तो मैंने क्या दिया है आपको, पूरे लाइन का कैरेक्टर दिया है 40, मतलब हर एक लाइन कितने साइज का है, 40 कैरेक्टर्स का है. तो मुझे इधर कितना कैरेक्टर देना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी शो यू. सो मुझे अगर कैरेक्टर देने हैं, मतलब लेंथ देना है, तो इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड, एफ वाला मेथड, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर. उसके लिए आपको जो लास्ट कर्ली ब्रेस है उसके पहले कोलन डालना है और विड्थ देना है. ठीक है, सो लेट्स एज्यूम यू गिव 40. ओके, मैंने 40 दिया, इसके लिए आपने 40 ले लिया, चलो समझो. Let's see. So if I now run this, ठीक है, ऑब्वियसली 40 स्पेस आ गया है, बट वो अभी लेफ्ट अलाइंड है. ओके, सो क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड रहता है, बट व्हाट आई वांट इज राइट अलाइंड. कैसे करेंगे राइट अलाइंड, सर वो ग्रेटर देन, yes, ग्रेटर देन. very good. So if I do this it is left aligned, if I do this it is right aligned, and if I do this it is center aligned. Okay, so मुझे क्या चाहिए, ये, right. So if I run this now, can you see I'm getting it, right. तो perfect मेरा आ गया, but this is not 40. ठीक है, मैंने क्या बोला था, पूरे कैरेक्टर का साइज 40 होना चाहिए, बट ये कितना हो गया, ये कितना हो गया,
कोई बता सकता है कितना हो गया? 45 हो गया। 41 45 हो गया। 41 हो गया। क्यों क्यों 45 हो गया? अच्छा sorry। क्योंकि ये वो नेम और कोलन। हाँ, नेम और कोलन 5 ऐड कर दिया उसने, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं साइज दूंगा तो पहले मुझे जो एक्स्ट्रा है उसको सब्ट्रैक्ट करके साइज देना पड़ेगा, समझे? तो ये 5 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 35, राइट? सो नाउ इफ आई रन इट, नॉट मच डिफरेंस, बट आपको समझेगा जब मैं नेक्स्ट वाला एज भी लूंगा तब समझेगा, ठीक है? सो लेट्स टेक एज, एंड इधर भी एज, एंड नाउ इफ आई रन दिस यू विल अंडरस्टैंड। दिख रहा है? अगर मैंने दोनों सेम रखा तो दिख रहा है ना क्या डिफरेंस है? प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को टोटल 40 सर चाहिए। 36 आएगा ना सर? यस 36 आएगा, वेरी गुड। क्यों 36 आएगा? बिकॉज टोटल 40 चाहिए, बट 4 पहले से ही है, राइट? तो बचा कितना? 36, तो मैंने यहाँ पे 36 डाला, राइट? सो इफ आई नाउ रन दिस यू विल सी द मैजिक। परफेक्ट, परफेक्टली राइट अलाइंड हो गया, राइट? तो ऐसे ही हर एक टाइम जब आप प्रिंट करोगे तब आपको उसको कैलकुलेट करके उसका लेंथ डालना है, ठीक है? यहां तक तो ठीक है। नाउ लेट अस टेक लास्ट एग्जांपल of password also. Okay, so password, and let's say 45. ओके, सो 2 डिजिट का पासवर्ड, ठीक है? अब समझो मुझे ये प्रिंट करना है, तो मुझे पहले बताओ विड्थ कितना डालूं मैं? बताओ विड्थ कितना डालूं? 31। 31। चलो देखते हैं 31 से काम बनेगा क्या? बन गया, राइट? परफेक्ट। थोड़ा और बड़ा ले लेते पासवर्ड, टेस्ट 1 2 3 4 5 6। ओके, थोड़ा बड़ा ले लेते तो अच्छा दिखेगा, ठीक है? तो यू कैन सी परफेक्ट अलाइनमेंट, ऑल परफेक्ट, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे पासवर्ड दिखाना नहीं है लोगों को, मुझे क्या चाहिए? उसको हाइड करना है। तो हाइड करना है मतलब जितने कैरेक्टर से उसको स्टार से रिप्लेस करने, राइट? सो बहुत ही सिंपल है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, first let us take a variable, let's say x is equal to star। ओके, बस मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है? नाउ आई विल शो यू अ वंडरफुल थिंग। नाउ आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, but I can do x into 2। Let me show you what happens. Can you see? This is not multiplication, huh? ये x into 2 जब करता हूं मैं, तो मल्टीप्लीकेशन कब होगा? जब उसके राइट में और लेफ्ट में दोनों में इंटीजर या फ्लोट रहेगा, तब वो मल्टीप्लीकेशन होगा। बट दिस राइट नाउ इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, इसके राइट में, इसके राइट में इंटीजर है, बट इसके लेफ्ट में क्या है? इसके लेफ्ट में स्ट्रिंग है। सो whenever this happens, whenever one of the parameter left or right is a string, then multiplication नहीं होता है, क्या होता है? रिपीटिशन होता है, ठीक है? तो रिपीटिशन कैसे होगा? तो स्ट्रिंग को जितने बार आपको रिपीट करना है वो यहाँ पे डालो, ठीक है? सो लेट्स से आई वांट टू रिपीट इट 10 टाइम्स, ठीक है? सो x, जो भी x है उसको आपको 10 बार रिपीट करना है। तो इफ आई रन दिस, कैन यू सी आई एम गेटिंग 10 टाइम्स स्टार। ओके, सो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, ओके, तो ये मेरा पैटर्न है, समझो। इसको अगर मैं रन करूं, कैन यू सी? ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना पाइथन का, बहुत बढ़िया है। यही चीज अगर आपको सी में करना होता
तो सोचो फॉर लूप लगाना पड़ता है इसके लिए, राइट? बट यहाँ पे सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड यू कैन डू दिस, ओके? सो दैट्स व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर अमॉन्ग्स पीपल कि बहुत सारी चीज़ें एकदम इजीली हो जाते, राइट? तो अभी मुझे क्या करना है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, स्टार से इसको रिप्लेस करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? मैंने आपको जो जो चाहिए सब बता दिया, अब मुझे आप बताओ कि कैसे करेंगे ये। जितने पासवर्ड में कैरेक्टर्स है उतने स्टार आने चाहिए, कैसे करेंगे? So length of len वाला यूज करेंगे. Yes, very good, very good. So absolutely. So instead of directly putting 10, what I will do is I will do length. Now length of what? Length of this field. Okay, so this field is s password. Okay, so जब मैं ऐसा करता हूँ, okay, and if I run this, you can see I get those many stars जितने इसके अंदर पासवर्ड है. Okay, so let me make this test ताकि अपने को काउंट करना इजी पड़े, ठीक है? सो 4 है, यहाँ पे स्टार भी 4 आए, ठीक है? परफेक्ट. सो वंस आई गेट दिस, नाउ ओनली थिंग आई हैव टू डू इज रिमूव दिस फ्रॉम हियर एंड पुट इट ओवर हियर, ओके? एंड ये निकाल दिया मैंने, ठीक है? प्रिंट करो, ये आ गया आपका आउटपुट, राइट? अगर आप पासवर्ड चेंज करोगे, बड़ा करोगे, तो आपको उतने स्टार्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है? Is it clear? Any doubts? सर वो पैकेजिंग का बताना सर वापस एक बार, अनपैकेजिंग का सर. Unpackaging. Okay. में बता दो. So I will just comment this out. Okay. If anybody is wondering how I am able to comment multiple lines together, then you just select it and press Control and question mark key on your keyboard. Okay. So when you do this, you can comment and uncomment whenever you want. Okay. So I'm just commenting it, and let's come down and let's look at unpacking. Okay. So let's suppose, so unpacking can be done with a tuple or with a list. Okay. Anything. You can do it with tuple, you can do it with list. Okay. So koi bhi chalega. Okay. So let's suppose you have A is equal to, let's say डेटाबेस का यूजर नेम है एडमिन और डेटाबेस का पासवर्ड है test123. ओके, सो ये दो चीज है, राइट? अब मुझे अगर यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करूंगा, बताओ? मुझे यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करूंगा? A of 0. वेरी गुड. तो मुझे यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं a ऑफ 0 करूंगा, राइट? सो दैट विल एक्सट्रैक्ट द यूजर नेम. परफेक्ट. अगर मुझे पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो a ऑफ 1 करूंगा, तो उससे मेरा पासवर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ. परफेक्ट. ओके, बट ऐसे एक्सट्रैक्ट करने में मजा नहीं आता. क्यों नहीं आता? बिकॉज जस्ट इमेजिन ना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको. आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लिख रहे हो, बड़ा मतलब 1000 5000 लाइन्स ऑफ कोड आर देयर. ओके, आप ऊपर कहीं तो आपने डिफाइन किया है ए, आप नीचे जाते हो, बहुत नीचे जाने के बाद अराउंड 1000 लाइन के बाद आप ए ऑफ 1 लिखते हो. क्या आपको समझ में आएगा ए ऑफ 1 यूजर नेम था या ए ऑफ 1 पासवर्ड था? समझ में आएगा कोई भी एंगल से? नहीं आएगा. बिकॉज हाउ विल यू नो व्हाट इज ए ऑफ 1, व्हाट इज ए ऑफ 0, राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो आपको हमेशा बार बार ऊपर जाना पड़ेगा. ए कहाँ पे है? ए का ए ऑफ 0 क्या था? अच्छा, ए ऑफ 0 यूजर नेम था, ए ऑफ 1 पासवर्ड था, राइट? सो दिस हैपेंस रेगुलरली, राइट? सो दैट्स व्हाई whenever you have an option to unpack, you do unpack. Okay,
that is only for readability. Okay, so as a good developer you should always give the names logically. Okay, ऐसे नहीं कुछ भी नाम दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. Okay, so यहाँ पे मैं कुछ भी नाम देने से अच्छा अगर मैंने ऐसा दिया था, ठीक है, सो यूजर नेम कॉमा पासवर्ड. ओके, सो मैंने क्या किया इधर, यूजर नेम कॉमा पासवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग. ओके, सो अनपैकिंग में क्या होता है, आई प्रोवाइडेड आई नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर ऑन द राइट. ओके, सो मुझे पता है 2 ही एलिमेंट्स है, तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल का नाम डालूंगा. एंड द रूल ऑफ अनपैकिंग इज, वो जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट है उसी ऑर्डर में अनपैक भी होगा. राइट, सो ये जो एडमिन है वो इधर जाएगा फर्स्ट में, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो. सो नाउ यू कैन सी, now whenever you want to access the username, instead of doing a of 0 you can write username. right, दिख रहा है डिफरेंस? आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट मतलब आपको थोड़ा सा ना थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा. जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तब सोचो आपको कैसा लगेगा. जब आपको कहीं नीचे जाके ए ऑफ 0 मिलेगा तब आपको समझेगा ही नहीं कि ए ऑफ 0 है क्या. बट यहाँ पे देखो, अब ये कहीं नीचे जाएगा, कहीं भी जाओगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा यूजर नेम मतलब यूजर नेम रहेगा. राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so the way you unpack and the name you give for unpacking. Now obviously bad unpacking भी कर सकते हैं हम लोग. bad unpacking कैसे करेंगे? this is called as bad unpacking. okay, या तो फिर completely अलग x y. ठीक है, ये भी अनपैकिंग ही होता है. आपने अनपैक किया बट फायदा क्या है इसका? राइट, आपने फिर से कंफ्यूज करने का काम ही कर दिया है. राइट, आपने एक्स एंड वाई किया, बट अभी आप नीचे जाओगे कहीं मतलब बहुत आगे जाके कोड में एक्स, अभी एक्स क्या है कि नहीं, फंस जाओगे वापस. राइट, सो दैट इज व्हाई वेन एवर यू डू अनपैकिंग, सी टू इट दैट द नेम्स दैट यू सेलेक्ट शुड बी appropriate. okay, so based on what values you are having उसके हिसाब से आप नेम भी सेलेक्ट करो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एनी क्वेरीज? सर पर अनपैकिंग मल्टीपल इनपुट्स के लिए काम नहीं आएगा ना, मींस एक लिमिटेड के लिए ना? अनलिमिटेड आपने के बोला लिए ना भी सर अभी है, यहाँ. अनलिमिटेड के लिए भी कर सकते हो आप, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद सिखाऊंगा. ओके, सो अनलिमिटेड के लिए भी कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस एग्जांपल. ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द इनपुट. राइट, सो इफ आई रन दिस एंड लेट्स से 4 स्पेस 5 मैंने इनपुट लिया. ओके, ऑब्वियसली मैंने प्रिंट ही नहीं किया, लॉल. ओके, सो लेट्स डू प्रिंट की वैल्यू. ओके, सो ये दोनों प्रिंट करके देखते. सो प्रिंट, सो 5 6 दो वैल्यूज एंटर किए, एंटर किया तो यू कैन सी 2 वैल्यू एंटर किया, 2 वैल्यू आउटपुट आया. ओके, नॉट अ बिग डील. बट नाउ इफ आई ट्राई टू रन इट एंड अगर मैंने 3 वैल्यू एंटर किया, क्या लगता है क्या होगा? क्या देगा? एरर देगा कि नहीं देगा कि क्या करेगा? शायद सर थर्ड वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकता. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू थर्ड वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा. ठीक है, लेट्स ट्राई. सो इफ आई प्रेस एंटर, कैन यू सी too many values to unpack? that means what? this has to be perfect. ऐसा नहीं है कि आपने दो स्प्लिट में 3 किया और अनपैक 2 ही किया, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, बट ऐसा कर भी सकते हैं. अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ. ठीक है, एक्चुअली मुझे बाद में दिखाना था, बट आई विल शो इट टू यू राइट नाउ. सो यू कैन डू
do one thing कि you can unpack few and remaining एक चीज में डंप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं की को अनपैक करता हूं और वैल्यूज सारे जो बचेंगे वो मैं इसमें डाल दूंगा, ओके। सो जस्ट बाय एडिंग अ स्टार you will make a lot of difference. Okay, let me show you. So if I run this and let's say I add so many values, okay, so according to you what will happen? 5 key, perfect, very good. So 5 will be the key और बाकी सब किधर जाएंगे? वैल्यू में जाएंगे। yes, perfect, very good. So let me press enter. Can you see? So बाकी सब का एक लिस्ट बन गया, ओके। सो नाउ दिस वैल्यू इज नॉट अ नॉर्मल वैल्यू, इट इज अ लिस्ट, ओके। सो 5 की में गया और बाकी जितने भी आप एंटर करोगे वो किधर जाएगा? वैल्यू में, ओके। सो इसका एक वंडरफुल एप्लीकेशन बताता हूं मैं। दिस कैन बी यूज्ड टू मेक अ कैलकुलेटर, ओके। सो लेट्स सपोज you want to add n numbers, okay, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका आप उसको इनपुट ऐसा देने वाले हो, ठीक है। ऐड 4 5 6 7, ओके, ऐसा आप इनपुट देने वाले हो, राइट। तो इस केस में कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट रहेगा समथिंग लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट, ओके, और लेट्स से मल्टीप्लाई 4 5 6 7, ओके। सो ये ऐसा आप इनपुट देने वाले हो। तो इसके अंदर पैटर्न दिख रहा है आपको कहीं? क्या पैटर्न है? तो इसको मेरे को स्प्लिट करना है अभी, तो कैसे स्प्लिट करूंगा? ये इनपुट है, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, ओके। सो लेट मी गो डाउन। सो दिस इज हाउ द इनपुट आई एम गोइंग टू गिव, ऐड 4 5 6 7, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, या आगे भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 ही रहेंगे या 5 ही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, राइट। तो कैसे स्प्लिट करोगे? ऑब्वियसली इनपुट डॉट स्प्लिट तो वही रहने वाला है, ठीक है। स्प्लिट करूंगा, देन व्हाट आई एम गोइंग टू, हाउ आई एम गोइंग टू अनपैक? कैन यू टेल मी? कैन आई डू दिस? स्टार वैल्यू सर। बराबर, कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? तो इसमें अभी होगा क्या कि ये तो अपना स्प्लिट का काम करेगा, राइट। तो इसको स्प्लिट करेगा, उसमें से सबसे पहला वाला जो है वो किधर जाएगा? ऑपरेशन के अंदर। और बाकी जितना भी आप एंटर करोगे, 2 3 4 15 20 जितने भी एंटर करोगे वो किधर जाएगा? वैल्यूज के अंदर, ओके। सो नाउ यू जस्ट हैव टू यूज an if condition or something like that to decide क्या करना है, एडिशन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट ऑपरेशन, एंड देन जस्ट डू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, ठीक है। सो ये है अनपैकिंग का फायदा, ओके। सो यू कैन यूज अनपैकिंग इन मेनी वेज, सो दिस इज वन वे। सो राइट नाउ डोंट बॉदर अबाउट दिस स्टार, अभी हम लोग सिर्फ फिलहाल 2 वैल्यूज का ही अनपैकिंग करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक क्लियर है एंड यू आर एबल, यू विल बी एबल टू डू दिस